Okay. Okay, so I'll share my screen just a second. दिख रहा है? हाँ, visible. Okay, so this is related to Azure Cosmos DB. NoSQL database जो है ना, तो Azure में we have something called as Cosmos DB, which caters to NoSQL database. So relational databases store data in relational table, but sometimes the structure imposed by this model can be too rigid and often leads to poor performance. तो NoSQL database तो आपने देखा ही है कि we have documents, graphs, key value stores, column value family stores, वो हमने देखा last time, right? So here we have all this comes under NoSQL databases, ये सारी चीज. Okay. So what Azure has done is that we have something called as Cosmos DB. So Cosmos DB is the service, highly scalable cloud database service for NoSQL database. When you say scalable means it can automatically scale, you know, for high volumes. अगर कोई बढ़ गया, users बढ़ गए, या फिर locations बढ़ गए, तो वो scale हो सकते हैं अपने आप, right? So that is the benefit of actually these cloud services. ये इसका फायदा है. So अब देखो नहीं तो क्रेडिट कार्ड एक अरेंज करो, अगर नहीं होता है कुछ तो विल ओपन वन अकाउंट. So 1 month के बाद वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है क्या फिर अमाउंट? नहीं होता नहीं है वो, फिर only if you convert it to pay as you go, then it will. Okay. अगर pay as I you have like a credit card easily arrange हो जाएगा. But will ask after this call only from my Bitwise manager if they can arrange or something. If not, तो credit cards कर देता हूँ. चलेगा, चलो, okay. So Azure Cosmos DB supports multiple application programming interface that enable मल्टीपल एप्लीकेशन. API मतलब API पता है ना आपको कि नहीं पता? API पता है ना, उस पे ही तो काम करता हूँ. अच्छा. GSL that enable developers to use API ना. Like any type of API, like we have a JSON body in that or a parameters we pass. Then वो database से link REST API, होता है. REST API. You are doing REST APIs, right? On like get, put and all these functions. हाँ, उसको REST API बोलते हैं. Okay. That is called as REST API. Because JSON use होता है ना उसमें. हाँ. Exchange the information. Correct. You're right. So Azure Cosmos DB supports multiple application programming interfaces that enable developers to use the programming semantics of many common kinds of data store. तो इसमें फायदा ये है कि वो कोई भी एनवायरनमेंट है ना, जैसे डेटाबेस का अलग अलग एनवायरनमेंट से वो सपोर्ट करता है. इट क्रिएट्स एन एब्स्ट्रैक्शन. So the internal data structure is abstracted, enabling developers to use Cosmos DB to store any kind of data. Okay. Just एक minute, just kindly hold on. Okay.
हेलो। Yes, sir. तो क्या है, वो सिमुलेट करता है सारे डेटाबेस इंजिन्स है ना आपके, ऑटोमेटिकली जैसा आपको जो आपको एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा। NoSQL के जो एनवायरनमेंट्स होते हैं ना, अलग अलग एनवायरनमेंट्स, सो कॉस्मोस डीबी कैन, आपको जब कॉस्मोस डीबी का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, सो दैट टाइम यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको कौन सा एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है। तो जो जिस पे भी आप कंफर्टेबल है उस पे वो चलेगा वो। So internal data structure is abstracted, enabling developers to use Cosmos DB to store and query data using APIs with which they are already familiar. Okay. So APIs, data application program, okay, database management systems and other software provide a set of APIs that developers can use to write programs that need to access data. The APIs vary for different database management system. All right. So you can use the, what do you say, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। आजकल ये हो गया है ना कि आप कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जो भी आपको आती है। हेलो हेलो। Yes, yes. So API के backend में जो हम कोड लिखते हैं that can be Java और Python और any language. बैकएंड में नहीं, एपीआई एक्सेस करने के लिए। अगर Okay. वो तो सिस्टम, एपीआई तो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है आपको, राइट? बट उससे इंटरफेस करने के लिए उसमें कुछ स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, जो भी करना है, तो यू कैन यूज हाँ. वॉट एवर लैंग्वेज दैट यू वांट टू। Okay. आजकल ऐसा हो गया। So Cosmos DB uses indexes and partitioning to provide fast read and write performance and can scale to massive volumes of data. Partitioning मैंने आपको बोला ना, indexing तो आपको पता है, what is indexing actually? Like to retrieve data easily, like if we have a multiple column or whatever one particular record we need from a bunch of a data huge amount, so if there is an index on that particular column then we can get it easily. Yeah, it's faster access. Indexing is Yeah, basically faster faster access. access. And partitioning से क्या होता है? What is the job of partitioning? So a group set of data, like if we are fetching any data but it has a partition on multiple columns, then that's it. It will only search for that set of data. Yeah, so partitioning किया कभी अपने partitioning? मैंने ऐसे क्वेरीज यूज किए वैलिडेशन के लिए, पार्टीशन ओवर पार्टीशन मतलब। ये Okay. थोड़े कंसेप्ट्स मेरे वीक है बट किया है, ऐसे यूज किया है। Hmm. समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज, अगर काफी बड़ा सीक्वल रहता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। Hmm. Yes, partitioning. We can जैसे you can partition by year. जैसे फाइनेंशियल ईयर से पार्टीशनिंग किया आपने जैसे, तो दैट इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। फाइनेंशियल ईयर से पार्टीशनिंग कर सकते हैं आप। तो उससे क्या होता है कि सारा डेटा आपको एक साथ लोड करने की जरूरत नहीं है, जो पार्टीशन जिस पे आपको काम करना है उसी को लोड किया आपने, राइट? तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दैट। तो कॉस्मोस डीबी क्लाउड सर्विस है ना, तो वो सारी चीजें जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, वो सब यूज करेगा। इट विल यूज ऑल ऑफ दोस। You can enable multi-region writes, adding the Azure regions of your choice to your Cosmos DB account. So that globally distributed users can work with the data in their local replica. तो ये distributed database है. What do you mean by distributed database? What is the like multiple, characteristics of? तो लाइक कुछ डेटा एक फॉर्मेट में, देन कुछ डेटा अदर फॉर्मेट में, दैट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। or multiple sort नहीं of नहीं conditions and indexing partitions are नहीं applied नहीं to a single data. नहीं, distributed database means it is working from multiple regions. That is distributed database. It works from multiple regions. That is what we call it as distributed database.
मल्टीपल रीजन्स से काम करेगा वो। तो अगर सपोजिंग आपका डेटाबेस इंडिया में है और आपके कुछ क्लाइंट्स यूएस में है या फिर जर्मनी में है, अलग जगह पे है, तो फिर क्या होगा कि इट विल बी, एक मिनट कॉल आ रहा है मेरे को। तो लोकल रेप्लिका उधर रहेगा तो इजी जाएगा ना इस तरह Yes. से। या हेलो। Yes. तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मींस वही रेप्लिका सब तरफ होगा, दुनिया के हर एक कॉर्नर में उसका रेप्लिका होगा, मतलब उसका कॉपी होगा। तो क्या होगा कि लोगों को अगर उसको कुछ एक्सेस करना है तो लोकली एक्सेस हो जाएगा ना, डेटा लेटेंसी कम हो जाएगा, समझे क्या आप? Yes. So that is the feature of distributed database. So Cosmos DB is a distributed database. वो एक environment देता है, scalable है और it can work from multiple regions like this. Okay. Multiple region writes भी हो सकता है, मतलब अगर उसको कुछ modify करना है तो it can modify also the data, right? Data modify भी कर सकता है. They can modify in the local replica, and that local replica में when you modify, then it can make changes to the main replica. Local read and write हो जाएगा तो उससे latency it will be less, you will have less latency. That is the beauty of this. Okay. Okay. एक So मिनट। our जो ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का एंड गूगल का, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जस्ट एग्जांपल. जस्ट अ मिनट। ओके. नहीं, ड्राइव वगैरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो ड्राइव तो आपका उसमें, हाँ अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड करते होंगे जिससे एक्सेस फास्ट हो, क्योंकि इंटरनल वी डू नॉट नो हाउ दे आर डूइंग, राइट? बट यस यू आर राइट। बट ड्राइव का कैसा है कि ड्राइव तो खाली एक ही जन एक्सेस करेगा ना, आपका ड्राइव है तो आप ही एक्सेस करोगे, राइट? उसको वो ड्राइव एट एनी गिवन टाइम एक जगह से एक्सेस होगा। अगर आप इंडिया में तो इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं, राइट? उसको बाहर का कोई बंदा एक्सेस नहीं करेगा, तो उसमें इतना चैलेंज नहीं है। बट अगर कोई एप्लीकेशन है विच वर्क्स ऑन अ डेटाबेस, so that database is required is accessed by many multiple thousands of users, right, from different corners of the world. तो तब फर्क पड़ेगा, तब इशू आएगा। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा तो सारा लोड एक सेंट्रल डेटाबेस पे आएगा, इट विल गेट हैंग। समझा क्या? सो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है। These are the practical difficulties normally which you face, right? So when to use Cosmos DB?
Cosmos DB is highly scalable database because it automatically allocates space in a container for your partitions, and each partition can grow up to 10 GB in size. Scalable है, scalable मतलब वो है कि अगर users बढ़ जाते तो भी वो चलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना? That is the idea. एक मिनट. Hello. Hello. Yes. What time will you come? 15-20 minutes. I'm a little busy. Can you come around 5:30? Is it possible for you? 5:30. अच्छा. Which time is suitable for you otherwise? Tomorrow same time you will come. Same time is what? 4 o'clock you see. चलेगा. 15-20 minutes you can come, you said right now. अच्छा. You had come before, no? First time you're coming to you or you come before? So on phone on your phone. Okay, then come, no problem, you can come. Okay, so when to use Cosmos DB, ये मैंने आपको बताया कि scalable है, मतलब क्या काफी सारे users में ऐड कर सकते हैं आप, और locations का भी कोई issue. Hello, you are able to hear me? Yes, sir. So automatically allocate space in container for your partitions, and each partition can grow up to 10 GB in size. So अगर storage का भी कोई issue नहीं, अगर storage भी कम पड़ गया तो automatically allocate करता है space. Indexes are created and maintained automatically. So virtually there is no administrative overheads, right? तो अच्छा scalable है, partitioned है, indexed है, सब कुछ है इसके अंदर, right? So Cosmos DB is a foundational service in Azure. Has been used by many Microsoft products for mission critical groups, include Skype. So Microsoft के जो products हैं, Skype है, Xbox हो गया, Microsoft 365, Azure and many others. तो ये सारे चीज यूज कर रहे हैं इसको, Cosmos DB को, ठीक है ना? So these are some various applications like IoT and telematics is one such application, retail and marketing, gaming, web and mobile application. IoT मैंने आपको बताया था ना कि what is IoT? What does IoT stand for? Hello. Internet. So IT stands for Internet of Things. Internet. Okay. So IoT is nothing but Internet of Things, and Internet of Things मतलब क्या? So nowadays, Like, yes. so we have devices, na? Nowadays, like we have आजकल सारे जो मशीन से वो भी इंटरेक्ट करते हैं ना मशीन से.
आईपी एड्रेस से इंटरनेट से इंटरेक्ट करते हैं। आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कार हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, राइट। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट्स है, पेशेंट्स के पास सेंसर होंगे, वो भी इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट से, तो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो उनसे जो डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए, सो वी कैन यूज दिस, राइट। So this can be used for Azure machine learning, HD Insight, Power BI, and all that thing, right? Then retail and marketing में भी काम में आएगा ये. Gaming application. So there's a lot of applications where you can use this NoSQL data basically. तो अब इसमें फायदा ये है कि देखो अभी ये अलग-अलग इंजिन्स है ये. जैसे मैंने कहा कि ये ऑटोमेटिकली इट इज अडेप्टिंग टू वेरियस डेटाबेस इंजिन्स, राइट. इट आपको जो चाहिए, जैसे ये पोस्ट एसक्यूएल, MongoDB, Apache Cassandra. So these are the database engines which are popular in the market, right? Gremlin. तो आप जब Cosmos DB का इंस्टेंस बनाओगे ना, तो you have to just select what do you want. आपको NoSQL वाला चाहिए तो NoSQL वाला आ गया. तो it is storing the data in form of JSON, but उसको querying आप SQL like query से करोगे ऐसे, ठीक है ना. ये abstraction create किया उसने. Even though the data is in form of JSON, but you query using a normal SQL syntax. समझ में आया? So एक abstraction हुआ यहाँ पर. वैसे MongoDB है. MongoDB is also this something called MQL. उसका MQL language होती है. तो you can create a instance with a MongoDB का instance. Okay. तो वो MongoDB का environment देगा. Then you can start interacting with the MongoDB का syntax ऐसे find ID equal to 123 like this. And result of this query is consist of JSON documents like this. Okay. Okay. Then PostgreSQL is also very popular relational RDBMS actually it is. So you can ask for that environment also. So you can store data, retrieve data using PostgreSQL format also like this. Okay. Then table storage. हमने table storage other day कल हमने देखा था ना, table storage where we have key value pairs, we have a row key, we have a partition key, right? So we can create an instance of that also. It will allow you to store data in that particular format. Then Apache Cassandra is a very popular storage or database for storing the column family database. कल हमने देखा था column family database what it is, right? Yes. You can group a number of columns under single heading, right? Yes. तो उसके लिए Apache Cassandra is one of the very popular database, so you can have an instance of that as well. Then Apache Gremlin, आप बोल रहे थे ना graph database, तो ये Apache Gremlin is used for storing the for maintaining graph data. तो उसका syntax थोड़ा अलग रहता है, इस तरह से रहता है. You can add some new nodes into it like this. इस तरह से हम कर सकते हैं. So this is for NoSQL database, उसके लिए है सब. So Cosmos DB adapts to all these environments, all these popular environments which are available, right? आपको उसका instance create करना है. Instance create करते वक्त you have to say कि I want PostgreSQL or I want Gremlin or I want NoSQL, I want table, okay? तो उस हिसाब से वो दे देगा आपको create करके environment. So that abstraction, it creates that abstraction. तो अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं, but वो syntax सब चलेंगे. जैसे आप डेटा जो नॉर्मल आप वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं वैसे ही करोगे. इंटरनली वो ट्रांसलेट करेगा उसको. एंड स्केलेबल एंड रिलायबल, स्केलेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड. परफॉर्मेंस की कोई टेंशन नहीं. इंडेक्सिंग कर रहा है, पार्टीशनिंग कर रहा है, सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं. समझ में आया? Yes. कैसेंड्रा चाहिए कैसेंड्रा, ग्रेमलिन चाहिए ग्रेमलिन, MongoDB चाहिए MongoDB, पोस्टग्रेस एसक्यूएल चाहिए वो मिल जाएगा, टेबल चाहिए वैसा मिलेगा. तो जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस, राइट. समझ जाए ना आपको? Yes. Yes.
ठीक है, मैं शेयर करता हूँ अभी आपको ये डॉक्यूमेंट। हाँ तो ये फुल डॉक्यूमेंट आज यही था, कॉस्मोस डी। हाँ ओके ठीक है, आज मैं थोड़ा इतना ही लेता हूँ, अभी थोड़ा आज ओके। थोड़ा सा पॉसिबल नहीं और लेना, तो मैं हाँ इतना हाँ। आपको इतना तो शेयर कर लाइक देता एक अप्रोक्स ETA 2 मंथ्स में हो जाएगी तो। हो जाएगा ना, अब कितने नहीं थोड़ा मतलब जल्दी कंप्लीट करना है तो ठीक। होएगा ना, और अब अकाउंट का खाली क्रेडिट कार्ड का आज आप आज ही अरेंज करता करें। हूँ वो। मैं पहले एक बार कंपनी से बेस्ट ट्राई करके देखता हूँ, वो देते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं। हम्म, हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, हो जाएगा। तो ठीक है। प्रैक्टिकल्स भी करवाने पड़ेगा ना, अभी एक प्रैक्टिकल हाँ हाँ एक्सरसाइज मेरे पास है, लेकिन प्रैक्टिकल्स अभी हम कर नहीं पा रहे, अभी मैं और थ्योरी लूंगा तो फिर सब थोड़ा बाउंस हो जाएगा ना। हाँ। जैसे right, कल हमने स्टोरेज पढ़ा, एज्योर स्टोरेज, राइट, तो उसका हाँ प्रैक्टिकल करना है। आज कॉस्मोस डीबी किया तो उसका भी प्रैक्टिकल है। सो वी हैव प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मेरे पास रेडी है, ओके। तो मैं वो कर। आज ही करता हूँ। एक मिनट, हाँ। आ गया what? आ गया ना, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा गो थ्रू हो जाओ आज। ओके। तो थोड़ा जल्दी भी कनेक्ट, अभी आपका तो डिप्लॉयमेंट चल रहा है ना, तो कल इतना नहीं रहेगा काम। कल सर एक्चुअली मैं लाइक मॉर्निंग पुणे ही आ रहा हूँ। हॉस्पिटल जाना है काम से, बट आई विल बी बैक अराउंड 2 और 2:30 तक आ जाऊंगा। लाइक मैं पहले ही आपको व्हाट्सएप कर दूंगा 1-2 आवर पहले। ठीक है, चलेगा। हाँ चलो ठीक है, इसको पढ़ो, अभी मैंने जो भेजा इसको पढ़ो, हाँ हाँ। रिवाइज करो। यस सर ओके। एंड अकाउंट का प्लीज जरा करो। आज आज सर कंफर्म कर। तो हम, और इफ बिटवाइस वाले नहीं दे सकते हैं तो कैन यू जस्ट शेयर मी द लिंक आल्सो कि कहाँ से लॉग इन एंड ये करना है फ्री अकाउंट पे। वो कर लेंगे हम, आप कार्ड अरेंज करो, हम अच्छा क्रिएट कर लेंगे, ठीक। कोई इशू नहीं। एज्योर चलो फ्री पोर्टल अकाउंट बोला तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, ओके। मैं हेल्प हाँ करूंगा आपको कैसे बनाने के लिए। ठीक ओके है, ओके। चलो, ओके, थैंक आई यू। सी यू, बाय बाय।